Good morning, everybody. So, in the last class, we talked about the conversion of NDFA to DFA, non-deterministic finite automata to deterministic finite automata. So, today we will again see that what we did in our last class, because some of the portion was not completed. Okay, so just one minute, let me open that class note. Yes, this was our class note of the last class. So let's we consider this example and we converted this non-deterministic finite automata to deterministic finite automata. So well, so this was our discussion in the last class. So in the second step, you can see our new coming state was A, B, C, D, E, because from state A using input 0, it was going to A, B, C, D, E. All the transitions were present from E to all other states. Okay, that's why this total all other states were considered as a single state in case of DFA. Right. Now, if the total set of states is considered as the single state, then it is a new state. Because total number of states together is a new state. So for this new state, we have to find out. We in the last class we find out how the transition will occur from this state using input 0. So to find out that, we will see that using 0, what are the transitions from A, what are the transitions from B, what are the transitions from C, what are the transitions from D, and what are the transitions from E. So we saw that the total number of transitions are A, B, C, D, E, because for A already there is a transition from A to A, B, C, D, E from Z using 0. Okay. So no problem, all the states will be considered here. मैम वेटिंग as a में है single. कोई हाँ? मैम वेटिंग में है Okay, okay. I'm accepting. Okay, so yes. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि सारे स्टेट्स जैसे ए बी सी डी ई ये सारा स्टेट एक सिंगल स्टेट के हिसाब से जैसे हम लोग कंसीडर कर रहे थे, तो 0 इनपुट यूज करके ये स्टेट से ट्रांजिशन क्या हम लोगों को मिला था ए बी सी डी ई, क्योंकि ए से ही सारा ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहा है यूजिंग 0. तो ये नया स्टेट मिला था और 1 यूज करके क्या मिलना चाहिए था हम लोगों को. From A, if I use 1, it is going to D state. From B, if I use 1, it is going to state E. From C, if I use 1, it is going to B. From D, if I use 1, it is going to 5. Then a null state. There is no transition using 1 from B. As well, there is no transition from E using 1. Ma'am, your voice is not clear. Hello. Okay. So the transitions will be from A, B, C, D, E using 1. These are the different transitions which we are going to consider together because our state is A, B, C, D, E. These total states are considered as a single state together. So, unique number of states we are getting here D, E, E and B. So, we should have write D, E, B or B, E, D. Should not come this C state. That was my mistake. C will not come. Okay. Here I did the mistake that I thought this is not E, this is C. Somehow I
this E. And somehow I missed this thing, and I thought that is C, but that is not C. Only the state will be B, D, E, okay, not any C, because C is not coming for any transition using input 1. Fine, that is only the thing today I used to mention. So then then let's look into this diagram. So from A using 0, it was going to A, B, C, D, E. So this is a single state, and from using 1, it is going to D, E state. So these two states are new states. A, B, C, D, E together is a new state, and D, E together is a new state. So you have to find out the transition from these new states using 0 and A. So from A, B, C, D, E, the new transition is A, B, C, D, E, and you are using 1 from A, B, C, D, E, the new state is B, D, E. Okay. How many new states and coming now? D, E and B, D, E. Because the process of A, B, C, D, E is done. Okay. The transition, we have already find that what are the transition exist for A, B, C, D. So we will now consider D and B, D, E. If any new states come, we will consider that too. So from D, E, using 0, we are going to state E. From D, E, using input 1, we are going nowhere. Then from BD, using 0, we are going to C, and from BDE, using 1, we are going to state E. So on. So now, what are the new states? The new states are C and this E. So from E, we are looking for the new transition, and from C also we are looking for the new transition. Here we see that the new state coming is B. So I am again considering B for the corresponding transition of B. And here as the C is coming, so we are looking for the transition from C using 0 and 1 as well. So from C, it is going to nowhere, that's why it is 5. And using 1 from C, it is going to B, state number B. Okay. This is the total conversion from DFA to NFA. If you have any confusion, then I will repeat. So please let me know whether you have any doubt or not. If you have understood fully, then I will go to the new topic. Okay. Okay. As anyone not asking any question, I consider that all of you have understood this thing. So as I told you, in DFA, whenever you convert from NFA to non-deterministic finite automata to deterministic finite automata, so we will consider this total set of states, whatever is written in each cell, as a single state. ABCDE is a single state, D is a single state, ABCDE again is a single state, BD is a single state, then E is a single state, and these are the unique combinations of the states which we will consider as single state. So for each of the state, there should be some transition for DFA. So it is written here. BCD, this is a single state. That's why it is kept under a circle. BD is a single state. That's why it is also kept under the circle. C also is a single state. That's why it is kept under the circle, and so on. So how many unique states are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 states. That's why it is written in the diagram. 8 states are drawn. 1, 2, 3, then 4, then 5, 6, 7, 8. Fine. 8 states. Now, which is our initial state? It's the same state, which is initial state in NDFA, will be considered as the initial state in the DFA, right? And now our turn is to find out the final state. Which state will be considered as the final state? Now, in FA, the final state was our state E. So wherever E is present, that state will be considered as the state in case of FA. So
state is present, E is present in this combination ABCD, E is present in the combination D, then it is present in BD combination, then single E is there, in C, then E is there. So how many it will be there? 1, 2, 3, 4, 5. In this total 5 cases, E is present. Okay, that's why this state is final state. This state is final state. C is state is final state. Here, BDE. BDE also will be final state. Forget to draw the double cycle, but it should be drawn as a final state. Okay, you should when you will consider this in your classroom, then you will draw the circle BDE. Today, after correcting it, I will repost this study material. Okay, I will repost this. Ma'am, This your already- voice is not clear. Okay, I just only I could do that. I will repeat. Okay. So this is the network issue. Okay. So BDE, this state will be considered as the final state too, because E is present there. Okay. Wherever E state is present, you should make that state as final state. BD state will be final state. This is all about the conversion from NDFA to DFA. This is all about the conversion from the NDFA to DFA. This is the state type of DFA, and this is the transition diagram or state diagram of DFA, right? And rename this state with some other name, like you could write capital A instead of this A. You could write a capital B instead of this ABCD. You could write capital C instead of DE. You could write capital D instead of BDE state. This way, you just rename these states and use accordingly. This also could be done. Okay. So this was the remaining portion of the last class. Now today we will discuss about the designing of deterministic finite automata. डिजाइनिंग ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों करेंगे? क्योंकि जब एग्जाम में हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई एक डीएफए दिया रहता है और हम लोग को पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करेगा। तो जब तक हम लोग डीएफए को कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई स्ट्रिंग को कैसे ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब तक वो हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कोई भी फ्रॉम एनी गिवन डीएफए हाउ टू फाइंड आउट दैट व्हिच स्ट्रिंग इट इज गोइंग टू accept. Okay, if we learn to construct a DFA for a particular string or particular language, then we can easily find out that for a given DFA which language it is going to accept, right? First we will I should write, because it's very difficult to use same paper here, so it is time consuming to design a minimal design a minimal DFA over input alphabet that is over input alphabet, that is A, B, such that every string accepts existing accepted
must start with substring W. Okay, substring W. I'm just writing substring W. So W means what? W may contain any value. So first, for the first question, I'm considering W equals to 1. So sorry, W equals to, suppose I'm considering W equals to A. Substring is A. Okay. So design a minimal DF over input alphabet A, B such that every string accepted must start with substring W. तो ऐसा कोई मिनिमल डीएफ हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें इनपुट सिंबल्स मतलब वेरिएशन ऑफ इनपुट आर ओनली टू हियर, दैट इज ए एंड बी, सच दैट एवरी स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग वहां पे एक्सेप्ट होगा वो शुरू होगा ए से, दैट विल स्टार्ट विथ ए, एंड आफ्टर दैट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी मे ऑकर. ओके, ऐसा अगर सिनेरियो है, then how to proceed? Okay. So I think all of you have joined. I can minimize this thing. Okay. So why it is written minimal DFA? Minimal DFA means we already know what is DFA. We know about the number of tuple and definition of DFA, which one is called DFA and all. And what is the meaning of minimal DFA? Minimal DFA means it has minimum number of steps. So you can DFA may be many number of steps, but here it is asked that you have to design a DFA which has minimum number of steps. So most steps content, the DFA may contain more than the minimal step, but you have to design it with lesser number, at most lesser number of steps. Okay, with least number of steps. So let's now consider what is told here. Every string accepted must start with W. So every string accepted must start with substring W. So if substring is, if W equals to A, then what is the string that will be accepted by the deterministic finite automata that we are going to consider? So start with A. So only A start with A, right? AB. If this is a string, then this is also start with A. Then AA. This is also starts with A. Suppose consider A, B, A. This is also start with A. Then A, B, B. This is also start with A. So our language is something like that. Language, I'm denoting our language as L. This contains this kind of all the strings which starts with A, followed by number of A's and B's, followed by any number of B's. So is it finite? It is finite because after A and how many B come and where will it come? We don't know. Voice is not audible. Hello, I am telling that in our language, string starts with A. The substring is A. That's why string starts with A. After this A, there may be any number of A's and any number of B's. There may be any number of A's and any number of B's. And how many numbers of A's and B's will come? We don't know. कितना A और B पहला वाला एक के बाद आएगा वो हम लोग को नहीं पता है. सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि ये जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ A से स्टार्ट होगा, लेकिन किससे हो सकता है? A से भी हो सकता है, B से भी हो सकता है. और कितना नंबर ऑफ A और B का कॉम्बिनेशन पहला वाला A के बाद आएगा वो भी नहीं है. दैट इज इनडेफिनाइट. So that's why the length of the language is infinite, because how many strings it may contain, that is undecidable. So that's why the length of the string is infinite. इतना दूर तक समझ में आया? कोई confusion?
कि क्या क्या स्ट्रिंग ये ऑटोमाटा एक्सेप्ट करने वाला है। इस टाइप का सारा स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट करने वाला है, और किसको किसको नहीं करने वाला है, जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट नहीं होके बी से स्टार्ट होने वाला है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा डीएफए बनाने के लिए जो कि ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इनिशियल स्टेट बनाएंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज मैं उसको नाम दे रही हूँ क्यू नॉट। ठीक है, और ये जो सिंगल एरो है उससे हम लोग डिनोट करते हैं कि ये एक इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में आने के लिए कोई इनपुट सिंबल का जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली मैं इनिशियल स्टेट बना सकती हूँ। इसमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि स्ट्रिंग जो होगा उसका स्टार्टिंग होगा ए से। तो ए से स्टार्ट होने वाला सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या हो सकता है, सिर्फ ए हो सकता है सबसे छोटा, तो उसके बाद कुछ हो ही ना। तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग पा सकते हैं एक्सेप्ट। तो मैं क्या करूंगी, ए यूज करके एक ट्रांजिशन बनाऊंगी, ए यूज करके एक ट्रांजिशन बनाऊंगी जो कि सपोज दूसरा एक स्टेट में जा रहा है, दूसरा एक स्टेट में जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टेट क्यों चेंज किया, सेम स्टेट में ही ऐसे क्यों नहीं लिखा, सेम स्टेट में ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मुझे पता नहीं चलता कि कितने बार ए फीड हो रहा है। ठीक है, ये कितनी बार ए फीड हो रहा है वो इनफाइनाइट टाइम तक हो सकता है, क्योंकि उस Q0 में ए आएगा, फिर से Q0 में जाएगा, फिर से आएगा, फिर से Q0 में जाएगा, फिर से आएगा, फिर से Q0 में। You cannot decide that only one A must come at the first position. तो यहाँ पे अगर मैं स्टेट चेंज कर देती हूँ तो ये मेमोरी के जैसा काम करता है कि Q1 स्टेट में मैं तभी आ सकती हूँ जब एक ए मुझे मिल चुका है। Q1 स्टेट में हम कब आ सकते हैं, इनिशियल स्टेट से जब मुझे एटलीस्ट वन ए मुझे मिला है तब मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। So whenever I'm changing the state, it is working like the memory, because in DFA there is no any other associated memory. So we have to remember the input based on the changing of this state. Remembering input that I have fed only A after doing this state change. So whenever I got A and when the transition will occur from initial state, then only I could reach to Q1 state. तो देखो इस लैंग्वेज में कौन सा स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ए भी एग्जिस्ट करता है। तो दैट मींस ए स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये अगर एक्सेप्ट करना चाहता है स्ट्रिंग ए को, सिर्फ ए को, then ये Q1 state भी final state होना चाहिए, that must be final state, then only it could accept this string A. उसके बाद क्या बोला गया है कि A के बाद B भी आ सकता है, A भी आ सकता है, या A B B A कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, we don't know. तो मैं यहाँ पे अगर एक सेल्फ लूप लगा दूं A के लिए, अगर यहाँ पे A के लिए एक सेल्फ लूप लगा दो और B के लिए भी एक सेल्फ लूप लगा दो, तो क्या ये सारे स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर पाएगा, देखते हैं। तो पहला स्ट्रिंग को देखते हैं, लैंग्वेज में पहला जो स्ट्रिंग है वो है A। तो Q0 से A यूज करके Q1 में हम लोग जा रहे हैं, तो मतलब ये एक्सेप्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है AB। तो Q0 से A यूज करके मैं Q1 में आया, फिर Q1 में B अगर मैं यूज करूंगी तो वो देखो फिर से Q1 में जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे A B भी एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंच गए हैं जो कि है Q1। फिर अगर मुझे A मिलता है तो फ्रॉम Q0 if I use A I could reach to Q1, and even again I use A I will reach to Q1 too. So what string it is accepting, A string it is accepting. अगर मुझे A B A मिलता है तो क्या होगा, from Q0 to Q1 using A we could reach from Q0 to Q1, again
I could use B. Then from Q1 to Q1, then again I could use A. So Q1 to Q1. So using ABA also we could reach to Q1 state. So all the string you can see all the strings are accepted by this automata. तो अभी क्या है कि मुझे मिला कि ये ऑटोमाटा है जो कि सारे स्ट्रिंग जिसका सेट ऑफ अल्फाबेट में क्या क्या एग्जिस्ट करता है ए बी से, मतलब स्ट्रिंग ए और बी से ही कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ऐसा सारे स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा जो कि ए से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सेटिस्फाई कर दिया। डिजाइन डीएफए इज एक्सेप्ट the string starts with small a, right? इतना तो मेरा हो गया, लेकिन बाकी क्या है देखो, ये जो डीएफए है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि डीएफए का मतलब ये है कि एक इनपुट सिंबल के लिए कोई एक प्रेजेंट स्टेट से एक ही ट्रांजिशन रहेगा। इतना दूर तक सेटिस्फाई कर चुका है कि Q0 स्टेट से A यूज करके एक ही ट्रांजिशन है, एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं। Q1 से A यूज करके एक ही ट्रांजिशन है, एक से ज्यादा ट्रांजिशन नहीं है। तो ट्रांजिशन किसको बोलता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? पाथ से या एरो से डिनोट करते हैं। ये जो एरो है, इस एरो का मतलब ये ट्रांजिशन हो रहा है, स्टेट ट्रांजिशन हो रहा है। तो Q1 से A यूज करके वो सेम स्टेट में आ रहा है, तो ठीक है, एक से ज्यादा ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं है। ए यूज करके, बी यूज करके Q1 से एक ही ट्रांजिशन है जो कि Q1 में आ रहा है। तो ये डीएफए का बेसिक कॉन्सेप्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जिसको सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा है कि ये डीएफए कंप्लीट नहीं है। डीएफए का कंप्लीटनेस का मतलब है कि सारे जो इनपुट यूनिक इनपुट सिंबल है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, तो सारे इनपुट सिंबल के लिए हर एक स्टेट रेस्पॉन्ड करे, हर एक स्टेट रेस्पॉन्ड करे। तो Q0 से A यूज करके तो एक ट्रांजिशन है, लेकिन B यूज करके कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो B यूज करके भी एक ट्रांजिशन मुझे बनाना पड़ेगा। तो कैसा ट्रांजिशन बनाए? तो डेफिनेटली अगर पहला सिंबल B आ जाता है तो डेफिनेटली वो तो एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं जाएगा, Q1 स्टेट में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? और एक स्टेट मुझे रिटर्न आना पड़ेगा। सपोज मैं उसको रीनेम कर रही हूँ, मतलब उसको नाम दे रही हूँ Q2, it must go to another state Q2 B यूज करके। देखो मैम कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मैं क्या करूँ बोलो तो? I'm talking, but due to network issue, this is happening. Okay, if you could not hear anything, I will upload this video later. Then you could hear everything from there. Okay, from the uploaded video, you can follow that. The thing I could do. Okay. तो इतना कंसिडर करो कि जब मैं इसको अपलोड कर दूंगी तो वहां से आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है? तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? I can see now 20। मैम इधर आप हेडफोन या फिर ईयरफोन यूज कीजिए, शायद तब अच्छा से सुनाई दे। मैं हेडफोन ही यूज कर रही हूँ। आई एम यूजिंग हेडफोन, वही मैं यूज कर रही हूँ। I don't know what else I could do. Okay, I am doing as much as I can. So if you cannot hear, you should follow this video later when it will be uploaded. Okay. हाँ, तो सब कोई अपना अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देना। अगर कोई नहीं लिखा है अभी तक तो प्लीज लिख देना, ठीक है? Q नॉट स्टेट से A यूज करके मुझे मेरे पास एक ट्रांजिशन है, लेकिन B यूज करके भी एक ट्रांजिशन मुझे चाहिए, तब ये स्टेट कंप्लीट होगा, राइट? तब ये
स्टेट होगा कंप्लीट। तो क्यू नॉट से बी यूज करके मैं Q2 में आई हूँ, लेकिन अब जैसे कि Q नॉट इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ से B से ट्रांजिशन करने का मतलब है कि फर्स्ट सिंबल कौन आ रहा है, B। फर्स्ट सिंबल आने से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैं Q2 में जा रही हूँ और Q2 से Q1 में और कोई ट्रांजिशन हम नहीं बनाएंगे। तो लोग बोलेंगे डेड स्टेट, बिकॉज द starts with B, it should not be accepted. So it will come to dead state, that is Q2. As Q2 is another state, that state should be complete. So that's why we need to write the transition that could occur from Q2. So I am writing A, B, comma B. I can draw different transition like self loop from Q1 to Q2, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ, B के लिए अलग लिखी हूँ, A के लिए भी अलग लिखी हूँ, लेकिन Q2 में मैं A, B लिख रही हूँ। उसका मतलब if A के after B, if or anyone like B came, so this will go to state number 2, Q2. Whether A is coming or B is coming, irrespective of that, it will go to Q2. The initial symbol is B, and Q2 is our dead state. Q2 is our dead state. I should write this is our dead state. Because whenever you reach to Q2, there is no chances to accepting the string. That's why this state is dead state. Now you can see the machine or automata is complete, because for each of the states, there exist transitions for all the input. So A के लिए भी transition है Q0 से, B के लिए भी transition है Q2 से, A और B दोनों के लिए transition है Q1 से, A और B दोनों के लिए transition है. So this automaton is complete. This finite deterministic finite automaton is complete, and Q2 is our dead state, and Q1 is our final state. Q1 is our final state. Final, right? और Q0 है हम लोग का initial state. Initial. So if today's class is completed, or it is time remaining 4 minutes, so today you don't have to join again. Okay, don't join again, because I am not elaborating this class. I will close it shortly. So this is all about the first example, that designing a final minimal automata, minimal DFA over input alphabet, where so the string starts with A. String starts with A. Right? एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, सब स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ आवर W is what? A. Only length of A, that is 1. So starting string length is suppose 1, then what is our number of states? Total number of states are 3. So we can map that if the starting string length is 1, then 1 plus 2 is our total number of states, which is minimum number of states. Total number of states are 3. Now, if it is said that W equals to AA, that means our string will be started with A, then what will happen? If our string starts with initial starting string is AA, then total number of states will be what? Length of W plus 2, which is 2 plus 2 will be 4. So that example we will discuss in our next class. And if you have any doubt, any question, then please ask regarding this. If you have not understood anything, I will repeat the thing. Hello? अच्छा, टोटली प्लीज मुझे बताना कि कितना सुनाई दिया और कितना मिस हो गया, कितना परसेंटेज आपको सुनाई दिया है, जस्ट फॉर आइडिया, जस्ट फॉर
मैम आवाज आता है, उसके बाद बीच में एकदम लो हो जाता है, एकदम लो, उसके बाद कट जाता है, उसके बाद फिर आता है, मतलब कॉन्स्टेंटली नहीं आता। समझ रहे हैं, दिस इज नेटवर्क इशू। मैं तो जस्ट मतलब माइक्रोफोन को एकदम होल्ड करके एकदम माउथ पीस मुंह के सामने लाके बात कर रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। किसी मैम किसी ने अभी सही नेटवर्क आ रहा है। किसी ने नेटवर्क कभी लो डाउन रहता है, कभी वो स्पीड बढ़ता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आप लोगों का ये रिकॉर्डिंग अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग वहां से भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, this meeting is about to complete. So any other question? Any other question regarding the previous class or this class? If you want to ask anything, then please. अच्छा, अगर मैं एक स्ट्रिंग ऐसे लेती हूँ, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बी ए बी स्ट्रिंग अगर लेती हूँ तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा? तो मैं चेक करती हूँ। अगर मैं इनिशियल से क्यू नॉट में हूँ, अगर मुझे बी मिलता है तो मैं Q2 में जाऊंगी, फिर से बी मिला तो मैं यहाँ पे सेल्फ टू यूज करके Q2 में जाऊंगी, और फिर से अगर ए मिलता है तो Q2 में जाऊंगी। तो मैं कहाँ पर आ जाऊंगी? Q2 में रह जाऊंगी अगर बी स्ट्रिंग मिलता है। So that's why any other string which not starts with A will not be accepted by this language. So you can choose any string and you can find out whether it is accepted.